Hello and good evening, everyone. How are you all doing? Welcome, Siddharthji. Welcome, Sakatji. A few people have sent me some messages. They are not able to join because of some priorities. No worries. We'll be starting in time and finishing time like what we did yesterday. So welcome once again, Siddharthji, Sakatji. And let's talk about what we did yesterday a little bit. And then we'll start with the today's session where we are going to talk about the practical implementation of whatever we learned yesterday. Yes, so Sakatji is somehow he messaged me that there is some problem. He cannot switch on his video. That's okay. What about you, Siddharthji? Can switch on your video? Yes, good to Hi. see you. Hi, how are you doing? Yeah, doing good. So we'll have a recap. Yeah, we have Hanumantaji as well. Welcome, Hanumantaji. Good evening. You are muted. Can unmute yourself, please. We're not able to hear you. You are muted. Yeah, Yeah, yeah. Good evening. Good evening. Sorry. Good yeah. evening. Good evening. How are Yeah. you doing? Fine, fine, all right. Good, good. Perfectly. Welcome, Mithura. Welcome. Good to see you back. Actually, I got three messages from three different people saying that they are not well or they have some other urgent things. So maybe I'm not going to wait for more people. Whoever is here, definitely we're going to carry on with the promises which I have made to all of you. So just a small recap I wanted to do because I think Siddharthji is new. Yesterday he was not there, and I got two, three more messages that yesterday a few people could not join, although they had registered. I told them that I'll be giving the recordings of day one, but I cannot continue because yesterday it was literally mind blowing with new concepts and new things, right? Which no coaches talk about. It was all about clarity and different psychological principles and neuroscience about making yourself clear in vision, in thoughts. Okay, so we are going to just do a short recap and then we'll start with day one. Okay, we have Divakarji as well. Meenaji, good evening. Divakarji, good evening. Good Good to see evening. every one of you. So, a small recap I wanted to do from your side. I don't want to do it from me. I just wanted to have a recap from you people in short sentences, in let's say 30 seconds or 1 minute, what we learned yesterday, just a small recap, so that people who are new, maybe one person is only new as of now, but it will be a refreshing thing for all of us, right? So anybody who wants to volunteer and say what you learned yesterday, just small recap. My learning yesterday, Alokji, was the six methodologies of gaining clarity. That was the biggest takeoff I had yesterday. Thank you so much. Yeah, Good. it was Nice. really helpful for me. Good, good. Uh, and yes, since you have been now certified with ICF, I know there are a lot of coaches teaching a lot of things. I have not seen this topic being discussed. I don't know why. But most of the people, they only talk about the strategies to get leads and sales and, objection handling and other things. But I think this is the core of every coaching, business, I would say, or any business. I'm not only limiting it to the coaching business because clarity is required everywhere in our life, in our business. Okay, we have Kruzina as well. Welcome, Kruzina. Good to see you. Yes, me too. Do you want to, just summarize what we did yesterday? Yes, sir. That clarity call. Actually, you have given a very clear picture on that. That how we can focus, and that your that questionnaire also was very very nice because it Hmm. was very like on a bigger way when we have done that all implementation with all examples you have done. You have said basically the clarity is very much important. Yeah. So I think once you give the recording because we tell because we may not be able to brief in such a way, but the learning we got, the key takeaways we got, Yeah. that was actually the impact is huge. Yeah, good. Thank you so much. Anybody else? Divakar ji, Meena ji, Yeah, I liked that clarity audit part, 10 questions which gave more clarity and thought process where we stand and how to improve that further on each point of that 10, 10 value system plus two questions in each, that 20 Right. sections. Good, good. Chalo, good. So we'll start immediately. I don't want to get into yesterday's entire thing, but yes, we just had a recap. So let's start day two with a bang. And I would like you to, just give me a feedback by end of the session. Can I ask for that?
can I request a feedback on whatever we did, we have done for these 2 days? Right? Yes, sure. Thank you so much. So let's start with day 2. Okay. So day 2, the Clarity Quest workshop. Let's get going. So what we did yesterday, a recap. In simple words, we talked about the motivational myths. We talked about why clarity is required. We talked about the brain functions, and we talked about clarity audit and clarity actions. So again, I have summarized it in 5 simple words, but actually we did a lot of things. We did certain exercises as well. And the clarity audit was again, and as Hanumantaji said, the 6 principles to gain clarity in an unconventional way, that was literally mind blowing. So you need to implement all those things. So we have already shared the learnings and the feedback of day 1. Let's understand how you are going to apply this clarity principles in your business, because our end goal is to build our business, right? So how to implement clarity? When I say clarity, I mean literally different things. Yesterday also you might have seen that I am going into the core of the brain and the functions, why clarity and how clarity can be gained. Now I'm going to give this clarity in terms of business. So when we are doing business, I start with yourself. We start business by looking at certain things, by getting attracted towards something, but we don't understand that what's there inside us. So when we are going to implement clarity in our business, I'll start with understanding yourself, then knowing your clients, understanding the business part, creating a system for business, and obviously learnings and adopting technologies. These all things are very much required. If we are clear in all these aspects of ourselves, our clients, our business, then only we can do a business in a better way. Do you all agree to it? The way I have prepared this training, Yes. this masterclass, the workshop, it is all about now implementing in a business. So I'll start with understanding yourself, correct? And again, I'm gonna give you certain shocks. Be ready for those shocks, because I loved giving shocks in terms of giving you clarity. As simple. I don't want to give you any electrical shock. I just want to tell you that these things are primarily required and important for us to understand how we are going to do things, and this will shape our business. So everybody is ready? Can I get an yes in the chat, please? Please mention yes and show some energy so that I am also that much energized to give you everything which I have, right? Okay. Alokji, I'm on a tab, so I don't think I've got an option of Okay. mentioning chats. Okay. Okay. No issues. But I'm there with you. Okay. Good. Chalo, let's start then. I'm there with you for my own benefit. Most welcome. So let's start with, understanding yourself. May I ask, how many of you can confidently say that you know yourself totally? How many of you can confidently say that you know yourself? Can I see raising hands, or somebody wants to unmute mic and say that, okay, I know myself better. I know myself at least 90% or 100%, 80%. How many of you can say this? Tell me. Be open and be raw. Yes, Minaji. Yes, sir, I know myself. How much? If I ask you in percentage, how can you tell me how much do you know yourself, about yourself? 95%. Okay, very Not nice. 100%. Okay, nobody would be, even I cannot say that I know myself 100%, but Ah. yes, 95% is really nice if I can say. But how do you put it in the words that I'm going to cover? Right? Anybody Okay. else who knows about themselves in a better way, 90%, 95%, 80%, 50%, whatever percentage you can talk about yourself. Yes, Siddharthi, you want to say something? Yeah, I can say I'm still exploring, Yeah. and so far it may be up to 60%. Oh, no problem. Yeah. So now we understand when we are just starting, and starting only is happening now. Only very few people can say that they know themselves for 90%, 95%. I'm damn sure even I can say that I know myself around 90% or 95%. I'm not telling that I know myself 100%, because there's so many things. Right now we are very less people here, 7-8 people here, and out of 7-8 people, only one person said that she knows about 90-95%. What about others? Why don't we know ourselves?
What's the problem? Why can't we know ourselves? Or why don't have we thought of knowing ourselves earlier? कभी हमने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि हम अपने आप को कितना जानते हैं? कभी ख्याल आया कि हमें पहले अपने आप को जानना चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं या लाइफ में भी कुछ कर रहे हैं तो हमें अपने आप को ज्यादा जानने की जरूरत है. Have we ever thought about it? Is it okay ना हिंदी इंग्लिश? Perfect. Yeah. Okay, let me go ahead. I'm gonna go very slow today compared to what we did yesterday, क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा बना था. आज मैं कम को ज्यादा बनाना चाहता हूँ so that everybody is grasping everything. Now, if I ask you, so knowing yourself, yes, I'm talking about understanding self. So I talk about it KYS, which is knowing yourself, right? KYC तो सब कोई जानते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी. So I termed it as KYS, know yourself. So what does it include? When I say know yourself, what does it include? Who are you? What are you doing? What's your aim? What's your mission? What's your goal? Why are you doing whatever you are doing? Are you clear in all these questions? If I ask you, if I give you something to write on all these questions, can you answer it immediately? Who are you? How do you define yourself actually? Who are you? I'm not asking about your name, right? Who are you means from a business perspective, who are you? What are you doing? What's your aim? What's your mission and goal? And whatever you are doing, what's the reason behind it? If you are not clear on these 4 questions, that means you are not knowing yourself. So, can anybody answer all this immediately if you're ready? So can I try? Yeah, why not? Definitely. Go ahead. I am a simple, authentic person, Okay. and that's why I just added my self-growth coach. Mm-hmm. What I am doing, I am doing job. Along with that, I'm just creating some side hustle income. Okay. The aim of my why I'm doing this and the mission and the goal. Let me share with the aim is every working professional is struggling and somewhere has in their mind ki something they need to start. Okay. So I'm just helping them to start them some additional income to burden lowering their EMI's burden. Okay. And mission is to reach at least 1 lakh of people in next 5 years, which I Good. have actually mentioned somewhere in my diary. Mm-hmm. And the goal is to create a community where everyone is helping each other. It's not about the creating a adding a knowledge or Yeah. creating their income. Just my goal is to creating a community where everyone is helping each other. Good. Why I'm doing? Because I have seen people struggled in their job, and when they lost their job, there is no income, only EMIs Yeah. is there, and we have seen in COVIDs. Yeah. So for what I am doing right now, I'm trying to build this business with like-minded people. Mm-hmm. And another goal I have kept myself with this income, not Mm-hmm. only me. Yeah. Who the person who is connecting with my community, they will be even helping to others also to grow, and some part of their income they contribute to the society, not only in the name of the tax only, but the other services also, so that as a country, as a citizen also, I can help my country even too with other services, like might be for senior citizen or for the education or something Correct. to serve the society. This is what is in my mind, and Very I nice. already written all these things in my mind. Correct. Correct. You are very much clear about everything. But when it comes to a business perspective now, we'll have to again redefine it and focus it. I talked about clarity. So whatever is in your mind, that's there is a short-term goal I can see, there is a long-term goal I can see, right? You want to do something for the senior citizens, you want to create a community for people who are literally lost or somewhere, right? So when I talk about implementing the clarity in business, let's go step by step. And even I'll literally appreciate your efforts about thinking everything and putting in your diary that you want to do this. That's called clarity. But again, there are stages. You cannot do everything at the very first stage, right? So there are stages. Yes. Stage 1 will be something, stage 2 would be something, stage 3 would be something. So we need to plan accordingly. But I really appreciated your efforts. Thank you so much, Minaji. So this is what I mean by telling you what you know about yourself. So again, my question is, can you define it? Like Minaji talked about a lot of things. Now, when I say define it, how do you define yourself? As a student, let's say, if
if I ask a student, a school going child, who are you? How does they respond? What are their answers? My name is ABC. I am son of Mr. XYZ, right? I read in school, this school, this standard. Maybe somebody might say that I love playing hockey, cricket, football, volleyball. That's it. That is what is their identity. Now, when I'm asking about who are you, I want to know your identity as a business professional, right? We are working here for some purpose, right? The purpose is to help हाँ somebody आ जाओ. create something and other things. So when I ask who are you, that means we need to be positioning yourself. We need to be showcasing ourselves in terms of our business learnings, right? So what are we going to do here? So when I say, can you define? How do you define yourself? In one sentence. Can anybody define in one sentence? Like Minaji talked about a lot of things, which is really nice, but nobody has that kind of a patience to listen to this many things, which is really good. We are now focused on one particular thing. We have to do something specific. So how do you define yourself in one sentence? Anybody has any idea? How do you define yourself in one sentence? As a business professional, we are not going to introduce ourselves like, my name is this, I'm somebody's son, and I'm somebody's father or somebody's husband. I live at this place. No, nobody's interested knowing that. Everybody's interested in what you do and how you can help them. That's your identity. That's your business identity, actually. So I have created a simple format where it says, I am so and so, your name. I'm passionate about what you love doing, and I see a void in the market for something, people who are ready to pay for it. I'm good at something, your skills, which has a demand, and I can help people with my expertise to give them certain results. If you can talk about this, it will hardly take 15 to 20 seconds to talk about. It has only 5 sentences or 4 sentences. 1, 2, 3, 4, 5. It has only 5 sentences. Can you create this identity statement for yourself right now? That is why I've created this format. Do it right here on the spot. That's why I messaged everyone that keep a pen and paper and just put it here on the chat. These are simple 5 sentences. This will give you clarity of what you are as a professional. Do it right away. I can wait for 1 minute. Is it simple? Is it difficult? I don't think it's difficult. Simple. Simple, no? Just write it. Write it. It will give you clarity. Let's say I'm your name, whoever you are. I'm passionate about. So what you are passionate about? Again, the love for the thing which you do, and what void you see in the market, which people can pay for, and what you are good at. And if whatever you are good at, that skill should have a demand, right? And I can help people with my expertise to give them a particular result. 5 sentences and you are done. So I'm taking you to the ocean, a blue ocean, I would say, where there would be less of competition and more of understanding, and you can do better business by understanding and writing these statements for your own. Right? Please put it in the chat so that even I can see what all you have written and who all have written. Anybody done it? So I talk about doing a workshop. Workshop means doing something on the spot here. We are not going to be just talking about things. We are here to do something on the spot so that we carry it for long. Right? I'm not seeing these things being taught even anywhere. These things might seem very basic, but these are the fundamentals, and I'm very focused on understanding the basics. If your basics are not clear, how can you proceed further? So again, you need to be clear on all this. So just mention it and put it in the chat, please. Do it faster.
Your time starts. Your time has already started, actually. Your time is about to finish. 5 sentences you need to write and put it in the chat, please. किसी ने किया? Anybody has completed? Yes, I got one message. Siddharth ji. I'm Siddharth. I'm passionate about business coaching. I see a word for aspiring coaches. I'm good at lead generation, lead nurturing. I can help people with my expertise to change coaches as low, high ticket lead magnet. Okay. Again, Siddharth, I'd like to add here, like you mentioned, I see a void in the market for aspiring coaches. What is this? Is again a very vague sentence, right? Okay. I see a void in the market for aspiring. What are these aspiring coaches looking for? That should be clear. Okay. Okay. To scale up their business as per their demand. Everybody wants to scale their businesses. That is not a void, actually. Everybody, every sabji wala, every ready wala, everybody is looking to increase their business. So you should be focused on what you are talking here. This is very vague sentence, and I don't prefer talking like this, right? Okay. So you need Got to it. change little here. And if you say I'm good at lead generation and lead nurturing, so you should be having some background to say this. How many leads have you Yes. generated? How many leads have you nurtured? Right? Okay. That should I be. got it. Anybody Got can it. ask you that. Okay, if you're saying that Yeah. you are good at lead generation, how many leads have you generated till now? Right? Okay. I understand. It has to be Yeah. very clear in the minds of your audience, because these are very vague. Everybody can say that I'm very good at this, I'm very good at that, but there should be some Okay. backup, right? If you Yeah. are a beginner, That I have. yeah, That I have. so that you should be making it very clear, so that you are clear and the message is going very clearly to the audience, I right? got it. Now Understood. you're saying that you can help people with my expertise to change coaches as high ticket lead magnet. This is not clear to me even. What are you trying to say here? Yeah, they can attract people. They can attract their dream client, Mhm. and they can change those people as Mhm. their customer. Again, lot of clarity is missing here. Okay, I understand. I will prepare it Yes. properly. I So understand now. Yeah, see, got by it. talking, even you are not clear. Your words are fumbling. If your Yeah. words are fumbling, that means the clarity is not there in your mind. As simple. Don't take me wrong. We are Okay, here let me to. let me write it in proper manner. Yeah, please do that. Okay, let me see Okay. next. Yeah. Mithu Roy, she has written, I'm Mithu Roy. I'm passionate about financial empowerment for women. I see a body in the market for homemakers and professionals. Okay, I'm good at managing money and create emergency fund. I can help people with my expertise to generation. Very nice. So lots of clarity is here. Can you see, Siddharji? You can see how she has written. With clarity, she has written that what void she has seen in the market, where she is good at, how she can help others. So that clarity needs Yeah. to be there in your mind. Divakar ji has written, I'm Devakar, I'm passionate about personal finance. I see a body in the market for financial wellness and stock portfolio coach. Very nice. I'm good at financial management and long-term equity investment. I can help with them. Very nice. Very clear. So the thoughts are clear. Meena ji is saying, I'm Meena Kamakar. I'm passionate about self-growth for working people. I see a body in the market for side hustle income and retire early. Very nice. I can help people with my exit to explore, take first step towards. Very nice. So these statements are not for me, actually. When you write about it, you are clear in your mind. If you are clear in your mind, only then you can write all this, right? So this will give you clarity. That's the basic of clarity, by knowing and understanding yourself first. Now, why I did this exercise, I'm going to tell you. This is very much important to understand the concept which has derived from Ikigai. You must have heard about the Ikigai concept. It's a Japanese concept for understanding yourself, right? So this concept of Ikigai talks about 4 things. Number 1, your passion, your mission, your profession, your vocation. And if I break it into 4 other things, passion is what you love. Mission is what the world needs. Again, profession is what you're good at. And vocation is what you can be paid for. Now, let me tell you, if somebody says that I'm very good at cooking, right? Let's start from there. Is there a need in the market for people who are teaching cooking or literally cooking? Yes, there is a market. There are cloud kitchens being opened all over the world, right? So there is a need. Are you passionate about cooking? If you are passionate about cooking, you can take it. Do you love cooking? Right?
Then when I say passionate and love, they are almost the same. But are you good at cooking? It's not about, let's say I say, I love playing. What? I love playing football. Let's say, for example, is it my passion to play football? Yes, it could be my passion to play football, but I may not be good at playing football. Mind it. There is a difference. I might have a passion to sing very well. I might have a passion to become a singer, but I may not be a good singer. I'm not good at singing. So here there is a contradiction. So everything has to be combined in such a way that whatever you do, your ikigai is a concept, as I told you, which should be coming out of these four things: what the world needs, what you can be paid for, what you are good at, and what you love. Is it making clear? Now let me put it this way now. This is you smiling, and the ikigai is talking about what you're good at, what you love, what the world needs, and what you can paid for. If your profession, the statement which we created just now, everybody has created that statement. If that statement doesn't fulfill all this, everybody has created this statement. Let's say 4-5 people have already done it. If this statement doesn't answer all this, that means you are not clear in your mind, right? So be very clear about what you are good at. And it's not only about you saying that I'm good at, right? Because everybody thinks that they are good at. Correct? It has to be backed by some facts and figures. Correct? How can you say that you are good at something? Anybody? How can you say that you are good at something? Anyone wants to say? If I have done something for myself and it has given me really that output what I have wanted, the desired result. Very right. Exactly. If you have done something, you have created some results for yourself, right? Then you can say that you are good at something. Or if you have helped somebody, they are talking good about it, that means you are good at. So either of the two. So it starts with self. If you have done something for yourself, definitely you can talk about it saying that I'm good at this, because you have created some results for yourself. If you are a beginner, and once you have gone to a stage where you have created results for somebody else, then even the third person will start talking about it, right? What do you love? How do you define what do you love? Maybe I love wearing good dresses, right? I love driving. I love playing, right? These are things what I love. But when I say what you love, what are you going to sacrifice for all this? Let's say if you love playing, definitely you would love to keep yourself fit. So what are you doing to keep yourself fit? Again, it should not be superficially saying that I love this. I love, playing piano, but since the last 4 years, I have not even touched the piano. That means I have not loved it. Correct? If you love something, you'll do something. Yes or no? Correct. Yes. Right? So ask yourself what you love. If you love jogging, if you love reading books, how many books have you read in the last 6 months, 1 year, 5 years? If you say you love travel, how many places have you traveled in the last 1 year, 2 years, 5 years? That is what is love. So when you say you love something, you do a lot of things. And I'll take it in the context of, personal relationship. There is a boy and a girl. There is a husband and a wife. There is a brother and a sister. If they love each other, see how much they sacrifice for each other, how much they contribute to each other. So what is the contribution of yourself in that particular thing when you say you love something? Correct? It should not be like, I love playing cricket. Everybody talks about playing cricket. It's not the love. Playing cricket means if you love playing cricket, you'll forget about even eating, sleeping, and you'll just play cricket for 10 hours, 12 hours, something like that. That is called love. Okay. Now let's go to what the world needs. How do you know what the world needs? Anyone? How do you know what the world needs? It is what you were thinking in your mind that I'll be starting this and people will pay for me. Or what is the requirement? What is the need? Have you done the need analysis? Have you studied the market? Or you've just started out of your own thinking that, oh, this is what is running in the market. Let's go deep dive. Customer मिल ही जाएगा मुझे. ऐसा सोच के किए हैं या आपने सही में कुछ रिसर्च किया है? See, my questions might literally put you at the back foot because nobody thinks like this. I'm literally forcing you to think this way.
Sir, I decided when I have gone through with the COVID era, and before that also I've seen people are struggling in this. Yeah. People are just putting, collecting the EMIs in their head. Most of the Yeah. working professional, even I see the basic salesperson who joined the company and the salary is annual package is 2.5 lakh and the iPhone is a 1 lakh. So nothing is, it's creating an EMI on your head, and if the job gone, Yeah. so EMI is a big hit. So they are True. actually collecting the EMIs instead of some assets. So I True. just want to make them realize ki create something else also. If somewhere is a job is not there. Yeah. Might be there is some any situation, and might be your health also not able to continue with the job, but at least you have something you can sit at home and do something for yourself. Correct. You have Correct. abilities and qualities, everything. True. Need not to go to do the suicide because of pressure of the sales and the stress. True. So that's why I just thought of that. Correct. Correct. So that is one. Now let's move to the another part. I'll come to that point again. What you can get paid for. Let's say you have also found out what the world is needing. Can you say that you are going to get paid for it? Again, is it again like seeing the market or just thinking on yourself that, okay, I'll start this and people will start paying me? Because you have seen a lot of people getting money from there. So now why I'm asking all these questions, because these are again fundamentals. And if you don't do this, if you just create these answers on your own without proper data and facts, you will be stuck at one point of a time. So what you have to do to get all these things done in place? So do research before coming to any conclusion with facts and figures. I always talk about data. It's not about what's going inside my mind. I may be wrong, I may be right. I might think something else. The world might be thinking of something else. If there is no sync, the business cannot sustain, right? So this is what I'm talking to you, that whatever you do, whatever conclusion you are bringing out of all these 4 questions, do it some research. Come to a conclusion with some facts and figures. Ask yourself these things. What you're good at? Take a pen and paper. Write 5 things you're good at. See what you love the most, what you're passionate about, and then check what the world needs. And if the world is needing, is the world ready to pay for it? If people are ready to pay for it, then only it can become a business, right? So this is an Ikigai concept which you should be knowing, and I'm sure you would be working towards it. So don't conclude anything without facts and figures from your own mind. Do some research. There are research tools available on the internet. You can do surveys, hard copy surveys, offline surveys, online surveys, and get the data before you conclude any of these things. Now let's come to the, okay. So point number 1 is clear. I have covered first thing, knowing yourself, correct? Understanding yourself. So can I now expect that you all people have understood who are you and you have understood yourself first, right? Clear? This requires a lot of work, Alok. It is not so simple. I know. That is आप अभी why. बता रहे हो तो मतलब आप मेरा पेन तो आधा में रुक ही गया. सोच तो बहुत रहे थे हम लोग. Mm-hmm. It's not I know. it's not really so easy. It will I take some understand. time See, for, at least for me, it's going to take time. no, for everybody it takes time. And the problem is what I'll tell you, Hemanta ji, people jump into the business without understanding all this. And that is the reason, because there would be a point where they'll be stuck and they won't be finding any answers because all this data are not in place. So I'm trying to literally correlate all these things which are required from the very first thing. I have done multiple businesses. I'll tell you, even I was there when I started my first business. I didn't do any research of this kind. I'll tell you, I'm very vulnerable. Nobody does it. Very few people do it. And those people who do it, they get ahead in times, right? You see, there are few companies who have started 3 years back. Now they are playing in crores, millions and millions, right? Why? Because they have understood all these things. They have data to back up, and that is how they propose, they get investors, and that is how they are growing faster. And there are companies who are 20 years old, but they're still, just struggling or surviving. They're not thriving. The only reason is these things, because they don't have clarity, right? So I'm trying to put this thing, which is not yet talked about it inside coaching industry. And I want you, all of you to, think about it before coming to any conclusion. Okay. Now we'll go to the second point, which is knowing your clients. KYC, everybody knows about this term KYC. So KYC is, in banking terms, it's about taking client's name, number, birthdays, anniversaries, right? That's it.
इतना ही होता है, and they'll be sending you a message, your birthday and anniversary, maybe your child's birthday as well. उसके बाद खत्म हो जाता है. But KYC is not related to only this limited things. So we should be knowing our customers. Knowing our customers is equally important than knowing ourselves. So how do you know your customers? Now, you might have heard, people might have taught you in different webinars, knowing your customers demographically and psychographically, right? These are very two common terms. इसके अलावा भी है दुनिया भाई. That is what I'm going to include, because that would be very monotone if I talk about only demographic and psychographic. It is known to. Now this industry is maturing. People know about all these terms. But how to include the basic things to know your clients better, that is what I'm going to cover. Let's talk about it. So what does it include? Knowing your clients. Number one, demographics. Everybody knows about it. You need to know the name, age, family, profession, kids, etc., of your ideal customer. I'm talking about ideal customer. That comes under demographics. Again, we can expand it a little more. Psychographics is behaviors, liking, spending patterns, social patterns, mingling, etc. ये तो दोनों आपने सुना होगा, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक. इसके अलावा क्या होता है which people miss out? Let me talk about it. So the third is belief system, which we get by birth, right? So there are regional and regional beliefs which helps you to know your customer better. I'll give you certain examples, don't worry, right? This is a belief system which people talk less about it, but this is one of the important criteria of you knowing your customer. What's their belief system? यदि आपके belief system में, let's say, I always give example. If you don't believe in investing, if you have not invested anywhere, you will not be able to charge high. Simple. That is a belief system. You don't believe in investing, so you will not be able to charge that kind of a person money. That is a belief system that you might have got through some sources. Correct? So there are multiple belief system. There are regional and regional and religional. I'll tell you an example. Like, you know, अभी कुछ दिन पहले रमजान चल रहा था. I was talking to a lady. She was from a Muslim fraternity, and she opted for a coach who belonged to that community and saying it was a Ramadan offer. That is what it works. So वहां पे क्या काम कर रहा है? रीजनल और रिलीजनल बिलीफ दोनों काम कर रहे हैं. Nobody talks about it, but it works. So that is what I'm going to include, the belief system. The third is the belief system. Then we have next value system, which we gather by surroundings. Now I'll tell you, हम अपने सराउंडिंग से बहुत सीखते हैं. बचपन से लेकर के अभी तक हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा होता है, we learn from there. Correct? So we create a value system for ourselves. Let's say telling lies, stealing, abusing, ये सब बुरी चीजें हैं, ये भी हम सीखते हैं. Helping others, ये भी हम सीखते हैं. Supporting others, ये भी हम सीखते हैं. So we create a value system for us from our surroundings. Yes or no? हम जहां रहते हैं वहां से चीजें सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं. Tell me yes or no? सीखते हैं ना? So why do we forget this criteria of understanding our customers, that उनका भी एक value system है? Correct? यदि आपका कस्टमर लिटरली यदि मैं बोलूं हेजिटेंट है बिकॉज ऑफ समथिंग, वो उसके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है. यदि उसने नहीं देखा है कोई चीज, उसके लिए नहीं हो सकती है. सो वट एवर वैल्यू सिस्टम आर कस्टमर्स हैव, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. एंड नंबर 5, सिंबल्स एंड कस्टम्स, राइट, विच वी गेट थ्रू कल्चर एंड ट्रेडिशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि if we are from Hindu religion, we prefer, you know, doing चंदन टीका, हम टीका लगाते हैं, राइट, और धागा बांधते हैं या कुछ करते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस. कुछ लोग टोपी लगाते हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, कुछ लोग कुछ पहनते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं पहनते हैं, काइंड ऑफ. सो देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स एंड कस्टम्स विच आर कस्टमर्स डू पोजेस, विच वी नॉर्मली फॉरगेट. हमें उनको भी जानना है, राइट. एंड देन सोशल ड्रामा. व्हाई आई कॉल इट सोशल ड्रामा? क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हो रही थी, हम उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं. सो हमारा कस्टमर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी में है, राइट. एंड दैट सोसाइटी इज इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्सन टू टेक सम, टू डू समथिंग, टू टेक सम डिसीजंस. So even your social drama, which includes the behavior of the society, which influences the buyer to buy or not buy or do something, that is a part of your understanding your customers. I don't think people have talked about it. ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताई,
किन के लिए it was like a Balban moment? Because everybody talks about demographics and psychographics. Nobody talks about all this. Yeah, Siddharth ji, value system and everything. बाकी सबको पता था ये सारी चीजें? पता था तो अच्छी बात है, right? चलिए, let's go forward. So if we know our customers inside out, we can connect with them better. The purpose is to know them inside out so that we can connect. How can we connect? Because we know what they like, what they do not like, what their belief are, what their value systems are. Correct? So the purpose is to know our customers in detail. Right? When I say in detail, your customer should be your best friend. You should be knowing your customer as your best friend. Right? The more you know about them, the better you can connect with them. Simple. Now, how you're going to get these details? Again, I'm really focusing on the how part. How you're going to get these details done? Again, not by thinking yourself, by doing some research, by doing some surveys, and by asking questions. Right? Don't decide anything on only the gut feeling or whatever it's going in your mind. You have to do this research, knowing about your customers. Correct? And I think I have done multiple previous sessions or trainings where I have also given you some, what do you say, format of understanding your customers. But this is even elaborated better because I have included few more things which I am learning, which I am implementing in my business. Right? So what you have to do is you need to use the principle of boiled egg approach or peeling the onion approach. So what is this boiled approach or peeling the onion approach is? You need to ask right questions to your audience to understand what's going in their mind. Nobody is going to give you everything like on a platter that, okay, these are the things which is going in your mind. Nobody will talk about it. But a friend, if you make somebody your friend and if you have spent some time, you know what value system they have, what are the things which can trouble them, what are the things they like, what they do not like, how they travel, how they spend money, and there's so many things. So you need to ask questions. So apply this principle of boiled egg approach or peeling the onion approach. This is like, unlayering, uncovering multiple layers inside the minds of your customers to know them better. Because a lot of people ask me like, how do you create your customer avatar? We don't know. I say that this is your ideal customer with whom you would love to work with. Now you need to start talking to those people to understand what's going on in their minds, right? So you need to take care of this by asking right questions. So you need to create your customer avatar or customer persona. People call it ICP as well, right? Your ideal customer persona, customer avatar, knowing your customer, whatever name you say. Ultimately, this is knowing your customer in detail as a friend. Okay. Let's move forward. Understanding business now. Okay. So when I say understanding business, what is my experience here in coaching industry, that there are a lot of people who have started business after pandemic, especially coaching business, right? They have left their jobs because of some reason or the other. They have ventured into coaching, but they have not done business earlier. So they don't know what a business means. They don't know what are the fundamentals of a business. They have, I could say, a shiny object syndrome, saying that, okay, this coach has earned this much money. If when I get into this, I'll start earning money. It doesn't work that way, right? So you need to understand how a business works. If you are making it a business, if you are really committed to make it a full-fledged business, you need to understand the principles of business, right? That is what I'm going to talk about now, understanding business. So, okay, let me ask you, how many of you have done business earlier before coming into this coaching? Business, I'm not talking about job. Business. Siddharth ji has done business. Okay. So very few. I understand that. Nothing wrong in it because everybody has to start from somewhere. But starting with some knowledge will give you better clarity of doing things. So let's talk about understanding business in that fashion, which will help us take us faster and better. So knowing and understanding business fundamentals. Let's talk about it. Number one, business plan. If you have done business, have you started with a business plan? What's your business plan? When I say business plan, it will come with a number and a timeline and a process.
I'm sure very few people do it. When I say business plan, you should be having a project report. Like, this is a business, this is where I am, this is what I'm gonna do over a period of 1 year or 5 years. This is gonna my plan. Yes, this will keep on reviving, changing, but you should be having an initial plan. Very few people do it, right? So whatever the mission and vision are, based on the mission and vision, you need to create a business plan, because business would happen with money. It won't be only by your talks. You need to plan some figures. Business is all about numbers, I'd say. If you can create some numbers based on the timelines, understanding what you need to do to create revenue, business won't happen if you are not able to generate revenue, right or wrong? बिजनेस पैसा से होता है, पैसा जनरेट नहीं करेंगे तो फिर वो बिजनेस नहीं है, देन इट इज ओनली अ हॉबी, राइट? एंड आई एम श्योर वेरी फ्यू पीपल हैव अ बिजनेस प्लान व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, राइट और रॉन्ग? हनुमंता जी, टेल मी, सही बोल रहा हूँ ना? मैंने देखा है, सी आई हैव बीन इनटू a group of MSMEs for longer period of time. My earlier business, I spent, this is my 14th year of my own entrepreneurship. I have spent a lot of time with SMEs. So I know this is a common problem. Nobody has a business plan when they start. So you should be having a business plan. Second, very few people think of marketing. Very few people spend in marketing. They think that marketing is only spending money और इसका तुरंत मेरे को रिजल्ट मिल जाए. बहुत सारे लोग मार्केटिंग को वैल्यू नहीं करते हैं. करेक्ट? If you talk about all SMEs, most of the SMEs, they do not do marketing. They do not spend on marketing. Right? And similar thing is here. Even inside coaching and freelancing business, there are very few people who are doing marketing in a proper way. और मैं आपको बताऊं, marketing की बात जहां तक है, marketing is always a sunk cost philosophy. This is a term which I learned. What do you mean by sunk cost philosophy? Anybody? What do you mean by sunk cost philosophy? So the literal meaning of sunk cost is पैसा लगेगा, right? पैसा डूबता जाएगा, आपको लगेगा. Sunking means पैसा आपको लगेगा जुअर. तो मार्केटिंग क्या होता है ना, मार्केटिंग में पैसा लगता है, शुरू में पैसा लगता ही है, तब जाके एंड ऑफ द डे यू गेट रिजल्ट्स. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपने सुना होगा 2-3 साल पहले या विद इन द पैंडेमिक, हमारे रामदेव बाबा, he crossed the revenue of HUL, Hindustan Unilever Limited, in terms of marketing. He was spending 5,500 crores annually to do marketing of his products. See the volume. 5,500 करोड़ वो बंदा मार्केटिंग में खर्च कर रहा है. बेवकूफ है क्या? या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, प्रॉक्टर गैम्बल, कोका कोला, या जितने भी FMCG कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी है, दे आर स्पेंडिंग हेविली ऑन मार्केटिंग. व्हाई? बिकॉज मार्केटिंग इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस. मार्केटिंग से आप लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाते हो, मार्केटिंग से आप लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करते हो, सो दैट दे कैन बाय योर प्रोडक्ट. सेलिंग तब होगी जब ट्रस्ट बनेगा. सो मार्केटिंग इज अ संक कॉस्ट फिलोसफी. अभी लोगों में क्या होता है, मैंने ऐड कर दिया, मैं तो 50,000 रुपये लग गए, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला. नहीं मिलेगा. मार्केटिंग में टाइम लगाना पड़ता है आपको, मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ता है पहले. यदि आपको लगता है कि बिना मार्केटिंग के आप कर लोगे काम, तो यू आर थिंकिंग रॉन्ग. आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस दोनों तरीके से. मेरे ऑफलाइन बिजनेस में, मेरे ऑनलाइन बिजनेस में. मैं भी पहले सोचता था यार बिना पैसे के बिजनेस कर लूंगा, मेरे में इतनी काबिलियत है. बट आपकी काबिलियत आप ही तक रहती है जब तक कि दुनिया तक नहीं पहुंचती है. दैट इज वेयर मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले. मार्केटिंग आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, और मार्केटिंग का पर्पस ही है टू रेज ब्रांड वैल्यू, टू रेज ट्रस्ट, सो दैट सेल्स कैन टेक प्लेस लेटर ऑन. मार्केटिंग के, सेल्स के पहले मार्केटिंग आता है. मार्केटिंग आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपके ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगी, ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा, तब तक सेलिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल हैव नॉट सीन यू, पीपल हैव नॉट बिल्ड ट्रस्ट इन यू. कैसे कोई खरीद लेगा? आप समझ के देखो इसको, राइट? सो मार्केटिंग इज वन थिंग विच पीपल इग्नोर इनसाइड द बिजनेस एंड विच इज वेरी कॉमन. आज भी बहुत सारे लोग मार्केटिंग में विश्वास नहीं करते. अरे पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है. वो पैसा बचाने के चक्कर में बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं. और यदि मैं आपको कुछ कोट्स बोलूं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में बड़े बड़े, डैन कैनेडी की यदि मैं बात करूं, आई एम अ फॉलोअर, बिग फॉलोअर ऑफ हिम. डैन कैनेडी कहते हैं कि द ओनली 1% विंस हुज एड्स आर रनिंग मोर एंड मोर, राइट?
तो मैं मना नहीं कर रहा आपको ऐड करने से, बट उसका एक तरीका है ऐड करने का. ऐड इज व्हाट यू आर स्पेंडिंग इन मार्केटिंग. तो सिर्फ ऐड ही नहीं करना, उसके पहले भी बहुत चीजें होती हैं, बाद भी कुछ होती है, बट यू नीड टू स्पेंड मनी इन टर्म्स ऑफ marketing so that your brand value is established in the market. If that is not done, it is very difficult to sell in the market, right? Okay, so let's talk about it little more. तो मैं जब मार्केटिंग की बातें करता हूं तो मार्केटिंग में बहुत सारे और चीजें आती हैं, जैसे ब्रांड बिल्डिंग हो गया, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. इसको मार्केटिंग के टर्म्स में एसटीपी मॉडल बोला जाता है. आपको मार्केट को सेगमेंट करना है, टारगेट करना है, पोजीशन करना है, अपने आप को पोजीशन करना है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, देखो इसके बाद. अच्छा, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग? एनीबॉडी हियर हु कैन टॉक अबाउट इट? आपको मैं बोलूं सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या होती है, तो कैन यू इलेबोरेट ऑन इट और आई एम गोना एक्सप्लेन इट. जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा कहता हूं यू कैन नॉट cater to the entire world. Number one, keep in mind, if you are going to serve everyone in this world, you are not going to serve anyone. So you have to segment first. When I say segmenting, let's say take an example of clothing brand. Correct? हम लोग सब कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग पकड़ते हैं. हमने दुनिया में बहुत सारे हैं, जूते हैं, चश्मे हैं, बहुत सारे चीजें हैं, घड़ी है, ज्वेलरी है, 50 तरह के नहीं 50,000 तरीके के आइटम्स हैं. हमने उसमें क्लोथिंग चूज किया. Correct? That becomes our niche, that we want to do something in clothing. Correct? That's how we have segmented ourselves. Clothing में अब किसके लिए clothing? Men, women, child. Correct? उसको हमने फिर से segment किया. कैसे किया? Let's say I'm saying I'm only focusing on men clothing. Let's say for example, अब men clothing में भी बहुत सारी चीजें आ गई. आप अंडर गारमेंट्स बना रहे हो, आप ट्राउजर्स बना रहे हो, आप शर्ट्स बना रहे हो, आप पुलोवर्स बना रहे हो, जैकेट्स बना रहे हो, कैप बना रहे हो. देयर आर सो मेनी आइटम्स. करेक्ट? अब यहां पे क्या नेक्स्ट? यहां पे यू नीड टू चूज अगेन, यू नीड टू सेगमेंट फर्दर. आप कहते हो कि मैं मेन के लिए सिर्फ शादी के कपड़े बनाऊंगा. आपका एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल है मान्यवर. मस्ट हैव सीन. वो क्या करते हैं? वो शादी के ही कपड़े बनाते हैं मेन के लिए, वो और कुछ नहीं बेचते. एंड दे आर सेलिंग इट ऑन प्रीमियम. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव सेगमेंटेड देमसेल्फ टू अ वेरी निश्ड ऑडियंस, जिनकी कीमत मार्केट में ज्यादा उनको मिल सकती है, क्योंकि शादी में लोग खर्च करते हैं दिल खोल करके, बजट का कंस्ट्रेंट नहीं होता. जो आमतौर पे 2,000 की चीजें खरीदता है, वो शादी में 20,000 का सूट भी खरीद सकता है. राइट? सो दे हैव लिटरली पोजिशन देमसेल्फ. उन्होंने पहले अपने आप को सेगमेंट किया कि पहले मेरे को मेन क्लोथिंग में जाना है, मेन क्लोथिंग में मेरे को ट्रेडिशनल वेयर में जाना है, ओनली फॉर मैरिजेस एंड अदर फंक्शंस, बिगर फंक्शंस. राइट? मुझे सूट और शेरवानी ही बनानी है. करेक्ट? क्लियर हो गया? और उसके बाद उन्होंने सेगमेंट कर लिया. उसके बाद अपने आप को उन्होंने टारगेट करा कि उन्हीं लोगों को जो शादी करने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को उन्होंने टारगेट करा है, या जो एनिवर्सरी मना रहे हैं वो उनके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं. तो उन्होंने टारगेट करा दो तरह के ऑडियंस. राइट? अब पोजिशनिंग क्या? उन्होंने कहा कि भैया हम किसी और चीज में नहीं है, वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ ओनली एज अ स्पेशलिस्ट टू बिल्ड और क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ क्लोथ विच विल एड मेमोरीज टू योर लाइफ. एक्चुअली दे आर सेलिंग मेमोरीज. इतना अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, आप उसको पहन के शादी में जा रहे हो यार, वो जिंदगी भर लोग याद रखते हैं, especially in Indian market, right? So this is a beautiful example of segmenting, targeting and positioning. अब ऐसे भी ब्रांड्स है जो सब कुछ बनाते हैं, दोनों में फर्क है. ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रहे, बट यहां पे इसने क्या किया, कंपटीशन खत्म कर दिया. मानवेयर जैसे दूसरा ब्रांड आप बताइए जो करता है. मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने कोई देखा मानवेयर के कंपटीशन में कोई खड़ा है अभी? Recently, Raymond has started one such. Yeah, very few. That is what I'm saying. So the cream has already been eaten by that company. है ना? आएंगे मार्केट में और लोग आएंगे, बट दे पोजिशन देमसेल्फ वेरी नाइसली. सो मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट बहुत है. इसी की वजह से इसी को मैं कहता हूं कि आपको निशिंग करनी है. वी टॉक अबाउट निशिंग, वी टॉक अबाउट माइक्रो निशिंग. सो दिस इज व्हाट दे हैव माइक्रो निश्ड. राइट? आप देखो ना, वो एक अमिताभ बच्चन जो बच्चों का ऐड करता है, क्राई, बेबी क्राई या कुछ ऐसा ना ब्रांड है, या चुनमुन ब्रांड है बच्चों के लिए. दे आर ओनली फर्स्ट क्राई. यस, फर्स्ट क्राई. ट्रू. तो क्या करते हैं, दे आर ओनली केटरिंग टू द इन्फेंट्स. बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं, और उनके कपड़े जाके देखो सस्ते नहीं होंगे.
जितना में बड़े का कपड़ा आता उतना में बच्चों का कपड़ा आता है वाई? बिकॉज दे हैव वेरी मच पोजिशन देमसेल्फ एज अ प्रीमियम ब्रांड हु इज कैटरिंग टू ओनली द चाइल्ड वाला एरिया, राइट? उनको बड़ों का कपड़े नहीं बनाना। अब आप सोचोगे यार हम बड़ों के भी कपड़े बना सकते हैं, हमारे पास तो फैक्ट्री है। फिर वही बात हो गई, यू विल बिकम अ जनरलिस्ट। जर्नलिस्ट को पैसे कम मिलते हैं, देन यू विल बिकम अ नॉर्मल ब्रांड लाइक एनीबडी एल्स। जैसे आप वैन ह्यूसेन का ले लो, वो भी पैंट ट्राउजर 50 चीजें बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ ब्रांड, बट उनका जो पोजिशनिंग है वो प्रीमियम फील वाली है। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया, करेक्ट? सो वी हैव टू बी वेरी मच फोकस अबाउट आवर ओन पोजिशनिंग विच आई कॉल निशिंग और माइक्रो निशिंग। इज इट क्लियर? मार्केटिंग का ये बहुत लोग गलती करते हैं, उनको लगता है यार मैं छोड़ रहा हूँ, ये मार्केट छूट रहा है मेरा, यहाँ से भी बिजनेस आ जाता, यहाँ से भी बिजनेस आ जाता। उससे ज्यादा अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो इफ यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर स्मॉलर ऑडियंस। और वो स्मॉलर ऑडियंस एक्चुअली स्मॉलर है नहीं। इंडिया की भी बात करें, 150 करोड़ पॉपुलेशन में कुछ भी स्मॉल नहीं है। 150 करोड़ का 1% आपको मिल जाना तो यूल बी बिकमिंग अ बिलीनियर, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सो हमने मार्केटिंग देख लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स। सेल्स में मैं हमेशा बात करता हूं प्री सेल्स, सेल्स एंड पोस्ट सेल सिस्टम्स। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो सबसे डेफिनेटली होते हैं। टू डू सेल्स यू डेफिनेटली नीड टू हैव आइदर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। बट नाउ अभी क्या होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, आप प्रोडक्ट ले लो या प्रोडक्ट बना लो, लोगों को कॉल पे बुलाओ और बेच दो। नहीं बिकता है ऐसे, और ये प्रोसेस पूरा गलत है। पीपल डोंट हैव अ प्री सेल सिस्टम। यदि प्री सेल सिस्टम नहीं होगा तो कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्री सेल सिस्टम होना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ सर्विस, व्हेन यू डोंट हैव एनी हार्ड प्रोडक्ट टू शो। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाओगे? आपका प्रोडक्ट सर्विस है एक्चुअली। आपके पास यदि मोबाइल खरीदना है, आपको आईफोन खरीदना है, आपको पता है यार आपको आईफोन मिलने वाला है, आईफोन में आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, ये है, यू गो एंड पे फॉर इट, राइट? आपको ट्राउजर लेना है, शर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, घड़ी लेना है, सो यू गो एंड यू फाइंड अ प्रोडक्ट, अ हार्ड प्रोडक्ट विथ विच यू कैन कनेक्ट। सर्विसेज में आप कैसे कनेक्ट बनाओगे? सर्विसेज में कनेक्ट बनता है आपके पर्सनल रेपुटेशन से, आपके पर्सनल ऑरा से, आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम से, और उसमें समय लगता है, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान काम नहीं है। दुनिया में आज के डेट में द मार्केट इज गोइंग ऑन अ ट्रस्ट रिसेशन माइंडेड। हर किसी को ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट बनाना इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट है, हर मार्केट में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। जिस बंदे का एक बार कहते हैं ना उंगली जल गई, और दूध का जला कहते हैं ना मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, जिसने एक बार उंगली जला ली वो बार बार डरता है करने से। तो दे वांट श्योरिटी, दे वांट सर्टेनिटी, दैट इज वेयर ट्रस्ट कम्स इनटू प्ले। तो वो ट्रस्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, सो दैट पीपल कंसिडर यू जेन्युइन। और आपको जेन्युइन ही रहना, आप फेक कर भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में बनने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि आप किसी पार्टी में गए, आपको कोई आदमी अच्छा दिखा या कोई लेडी अच्छी दिखी, यू कैन गो एंड बिकम फ्रेंड्स, बट पहले दिन है आप बैठ के दारू नहीं पियोगे साथ में। अब पहले ही दिन बैठ करके आप उनसे अपने दिल की सारी बातें नहीं करोगे। यू नीड टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट, टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद देम, करेक्ट? सिमिलर थिंग इज हियर इनसाइड कोचिंग एंड फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। यहां भी वही होता है, पहले दिन कोई आपसे शेयर नहीं करेगा, लोग हेजिटेंट होते हैं, क्यों बताए भाई आपको, आप हो कौन, है ना? तो जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे कि आप हो कौन उनके लिए और आप उनको कैसे मदद कर सकते हो, तब तक वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे। सो योर व्हीकल इज नॉट गोना मूव फॉरवर्ड, correct? So building trust is primarily very much important again when we are talking about building a business. So sales mein pre-sales is one important aspect where you build trust, you nurture audience, right? And when you go on a sales call, again sales is a big subject, I always talk about it. Sales is a big subject. Sales ऐसा नहीं कि आप theory पढ़ के सीख सकते हो। Sales is something which you need to do it on a regular basis. जैसे मैं कहता हूँ ना मैथ्स, मैं सेल्स को मैथ्स से कहता हूँ, मैथ्स बस करने से होता है, मैथ्स थ्योरी पढ़ के नहीं होता। जितना आप मैथ्स के सम करोगे उतना आप अच्छे से आगे और सम करते जाओगे। उसी तरह सेल्स है, सेल्स द मोर यू डू टू सेल्स द बेटर यू विल बी बिकमिंग अ सेल्स पर्सन। तो जितना आप करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। यस, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन सेल्स साइकोलॉजी जिसको आप पढ़ सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इज नॉट दैट इजी, इट विल कम विथ प्रैक्टिस। सो यू शुड बी लर्निंग दिस सेल्स स्किल if you are going to get into a business, and this is one of the major blockage। मैं देखता हूँ जो लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आते हैं उन्होंने कभी सेल्स किया ही नहीं, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सेल्स किया होता है, राइट? अब उनको यहाँ पे सेल्स भी करना है, इनको यहाँ पे मार्केटिंग भी करना है,
उनसे उनको लगता है यार क्या क्या करूंगा, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन टू दैट। बट सेल्स ऐसी स्किल है, मार्केटिंग ऐसी स्किल है, मार्केटिंग तो आप चलो आउटसोर्स कर भी सकते हो इनिशियली, बट सेल्स इनिशियली आपको खुद ही करना होता है। बाद में जब आप इतने बड़े हो जाओ कि यू कैन हायर अ टीम टू डू सेल्स ऑन योर बिहाफ, दैट इज ओके, बट सेल्स आपको आना ही चाहिए। विदाउट सेल्स यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, बिकॉज सेल्स फिचेस डायरेक्ट रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। पैसा सेल्स से ही आता है, मार्केटिंग पैसा ले जाता है, सेल्स पैसा लेके आता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? सेल्स होगी तो पैसा आएगा, मार्केटिंग आपको उसमें हेल्प करता है उस सेल्स को होने में। दैट इज वाई पीपल इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन मार्केटिंग, राइट? और एक बार जब सेल्स हो गई तो यू शुड बी हैविंग अ पोस्ट सेल सिस्टम फॉर योर कस्टमर्स टू हैव अ गुड फील। ऐसा नहीं कि पैसे ले लिए और भाग लिए। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोग से, यार जब तक पैसा नहीं लिया था तब तक तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, जैसे पैसा दे दिया उसके बाद से पता ही नहीं क्या हो रहा है। होता है ऐसा? तो आपके पास एक पोस्ट सेल सिस्टम होना चाहिए वेयर कस्टमर फील्स सबसे पहले रेस्पेक्टेड, और उनको लगे कि यस दे हैव इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस, और उनको लगे, लगना ही नहीं है, आपको एक्चुअली करना है, ताकि उनको एक स्मूथ जर्नी आप दो। उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, आप पे इन्वेस्ट किया, सो दैट दैट जर्नी इज कंफर्टेबल फॉर देम, दे आर कॉन्फिडेंट। नहीं तो पैसा लेने के बाद कोई फॉलोअप नहीं होता। मैंने भी ये चीज महसूस किया है, और मार्केट में ये चीज है, तभी मैं कहता हूँ मार्केट में ट्रस्ट की बहुत कमी है आज की डेट में, जस्ट बिकॉज पीपल आर बिहाइंड योर मनी। पीपल, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर लिटरली बिहाइंड योर सक्सेस। सबको अपना धंधा बढ़ाना है। मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, आई ऑल्सो आस्क मनी, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं इतना कंसर्न हूँ आपके लिए, जो मेरे पेड कस्टमर्स बता सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, बट आई एम लिटरली कंसर्न। सो वो कंसर्न आपको सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको दिखाना भी चाहिए, आपको एक्शन में होना चाहिए, करेक्ट? सो प्री सेल सिस्टम एंड पोल सेल सिस्टम, you should be having all these three systems in your business thing. Now let's come to the next part, which is finance, budgeting and data tracking. आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्रैकिंग हियर इन अ बिजनेस? वेरी फ्यू, आई टेल यू, वेरी फ्यू। सी आई हैव अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म फ्रॉम ईयर 2010, 14 साल हो गए, मेरा एक एक पैसा अकाउंटेबल होता है। इफ यू हैव बीन इनटू कंपनीज, यस मीना जी नोज, शी वर्क्स विद अ कंपनी, बिग कंपनी, सो शी नोज अबाउट इट। क्या होता है, आप लोग कोई भी काम आप करो, यदि आपको आपका मिट्टू रॉ इज इनटू फाइनेंस, शी नोज हाउ टू डू दिस फाइनेंस मैनेजमेंट। आपको पता ही नहीं होगा आप कितना महीने का खर्च कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, तो आप आगे कैसे प्लान करोगे? So there are very few people who understand the value of literally the data of understanding how much money, how much time, how much energy you are spending, and what is the outcome, और उसको कैसे आगे लेके जाना है। प्रॉफिट लॉस इज अ वेरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इन सब चीजों का। वो तो हम मंथली अपने लेवल पे कर सकते हैं, एनुअली ऑडिटर्स करते हैं, उसकी अलग बात है, बट मैं कहता हूँ डे टू डे लाइफ में यू शुड बी थिंकिंग कि एक महीना आपने काम किया, इस एक महीना में आपने कितना एनर्जी लगाया, कितना टाइम लगा, उसका आउटकम क्या था, राइट? लोग ये नहीं करते। आई वॉज टॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, आई टेल यू, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। देयर वाज अ लेडी, शी वाज वेरी हैप्पी, मुझे 15,000 का महीने का हो जाता है, मुझे 20,000 महीने का हो जाता है। मैंने कहा सपोज कर लो कि आपके घर में आप ही कमाने वाले होते हैं, आपका घर खर्च कितना है? कहे कि मेरा घर खर्च करके 50-60 हजार रुपये होता है। एक एवरेज मेट्रो सिटी में रहने वाले का इतना खर्च तो होता ही है। मैंने कहा 20,000 में खुश हो? यदि आपके हस्बैंड कमा नहीं रहे होते तो आप तो लॉस में जाते। शी वॉज शॉक्ड, बोले हाँ। तो मैंने, आप बिजनेस कर रहे हो कि आप टाइम पास कर रहे हो? तो मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड हो गया उनके लिए। मैंने कहा यदि आप बिजनेस कर रहे हो, कंसिडर योर सेल्फ एज एन एम्प्लॉय टू योर ओन कंपनी। माइंड इट, इट्स वेरी सीरियस थिंग विच आई एम गोना टॉक अबाउट। कंसिडर योर सेल्फ एज एन एम्प्लॉय टू योर ओन कंपनी। आपने अपने आप को हायर कर लिया अपनी कंपनी के लिए, ठीक है? जब आप अपने आप को हायर करोगे तो सैलरी दोगे अपने आप को, एक फिक्स सैलरी देते हैं हम लोग अपने एम्प्लॉय को। यदि आप उससे ज्यादा नहीं कमाते हो तो आपकी कंपनी तो लॉस में जाएगी, या आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। सो व्हाई डोंट वी थिंक दैट दिस इज अ बिजनेस वेयर आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ माय ओन कंपनी एंड आई हैव टू जनरेट दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू सो दैट माय कंपनी इज रनिंग स्मूथली, और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद फिर मैं सैलरी लूंगा। डू वी थिंक इन दिस टर्म्स कि इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए जिसमें हम अपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे से अपने खर्चे निकाल लें और हम प्रॉफिट में जाए? पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। दिस इज अगेन वन नेगेटिव थिंग्स which people don't take care, which is important for your business, right? Next is operation and tools. ऑपरेशन एंड टूल्स में बहुत सारी चीजें हैं,
चाहे वो मार्केटिंग ऑपरेशन हो, चाहे सेल्स ऑपरेशन हो, चाहे डिलीवरी ऑपरेशन हो, आपको टूल्स एंड ऑपरेशंस के सिस्टम बनाने पड़ते हैं एक बिजनेस में। अभी क्या हो रहा है कोचिंग में, सिंस देयर इज नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो इन्वेंट्री की जरूरत होती है, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। टूल्स की जरूरत होती है। फ्री टूल्स हर टाइम आपको काम नहीं आएंगे। जो भी कंपनी टूल्स बना रही है वो भी कमाने के लिए बैठी है, राइट? सो वो फ्री में कुछ आपको सर्विसेज देंगी, बट जैसे आप अपस्केल करना चाहोगे दे आस्क यू टू गेट इनटू द पेड मोड, करेक्ट? वो पेड में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल ऑपरेशंस आर नीडेड एंड व्हाट आर टूल्स आर नीडेड। आपके ऑपरेशंस के हिसाब से आपको टूल चाहिए। मान लीजिए कोई सीआरएम टूल चाहिए, मान लीजिए कोई ऐसा टूल चाहिए, मान लीजिए एक एलएमएस सिस्टम ही चाहिए, मान लीजिए एक आपको क्या कहें, एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए जहां पे आप डिलीवरी ऑटोमेशन कर सकते हो। इन तरह की चीजें हमारे कोचिंग और फ्रीलांसिंग बिजनेस में चाहिए होती है, जिसमें हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। Then comes leadership. One of the important things. You need to be a powerful leader in your own. यदि आप पावरफुल लीडर नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप कहते अरे मार्केट ऐसा चल रहा है, हो रहा है, हो जाएगा, then your business is not going to survive. You need to take that ownership. You need to take that responsibility to make this happen, right? आप मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते। देखो मार्केट में रिसेशन, आप कहोगे यूएस में अभी भी रिसेशन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड अभी रिसेशन आने का है नेक्स्ट ईयर, करेक्ट? बट क्या हो गया, क्या सारी कंपनियां बंद हो रही हैं? नहीं ना। दे आर प्लानिंग वेज टू फाइंड द एडिशनल एवेन्यूज सो दैट देयर रेवेन्यूज डोंट गो डाउन। वो ऐसा नहीं है, आप कुछ लोगों को निकालेंगे, जब रिसेशन आता है तो उनको बहाना मिल जाता है लोगों को निकालने का भी, वो भी होता है, छटनी होती है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर बिजनेस? हमने 3 पॉइंट कवर किए, 2 पॉइंट और रह गए हमारे, एंड वी आर इन टाइम। अभी हमारे पास टाइम क्या हो गया, 8:06 हो रहा है। वी हैव सफिशिएंट टाइम। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर बिजनेस? एनीबॉडी? सिस्टम फॉर बिजनेस का क्या मतलब हुआ? बिजनेस में क्या सिस्टम होना चाहिए सो दैट योर बिजनेस रन स्मूथली? ऑटोमेट करना। Yeah, automation is one. Yes, there are so many things. Automation is one, definitely. Okay, let me talk about it. नंबर 1 जो मैंने आपको बोला, मार्केटिंग। बिजनेस में मार्केटिंग बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। जो एसटीपी है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, आपको इसको माइक्रो निशिंग करनी है। अपने बिजनेस को माइक्रो निश में लेके जाना है। यू नीड टू फोकस ऑन हु, व्हाट एंड हाउ। कौन आपका राइट ऑडियंस है, कौन से मार्केट में आप जा रहे हो, क्या सोल्यूशन दे रहे हो, ये आपको बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट मैंने पहले कवर किया था। नाउ आपको माइक्रो निशिंग करनी है, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, जो मैंने क्लोथिंग का एग्जाम्पल दिया, मैन्यूवर का एग्जाम्पल दिया। आपको भी अपने हिसाब से you need to think about a particular smaller target audience with whom you are going to work. So find a micro niche, that is called a blue ocean technology, blue ocean philosophy. छोटे मार्केट, छोटा मार्केट मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा है, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि आपको 4 लोगों के साथ काम करना है। a very specified market in which you deliver your services, that is called micro niching. So business में सबसे पहले ये आता है, और यदि आप याद रखो, मैं पहले भी बहुत बार एक्सरसाइजेस करा चुका हूँ। यू हैव टू क्रिएट ए स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू डू। जैसे अभी मैंने आपको एक इंडिविजुअल के लिए स्टेटमेंट बनाया, एक बिजनेस स्टेटमेंट में बोलता हूँ बनाने का, विच मेंशंस योर हु, व्हाट एंड हाउ, हु योर टारगेट ऑडियंस इज, व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गिव देम, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गिव देम। सो आई हेल्प, लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ आई हेल्प कोचेस टू जनरेट हाई टिकट लीड्स ऑन डिमांड थ्रू फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट? तो ये मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। Similarly, you have to create that which we have already done for many people. Second step is brand building. So marketing का ये step 1 है, जहां पे आपको segmenting, targeting, positioning करनी है, micro niching करनी है। Second step is brand building. What you stand for, what value system you have, and what's your USP. जब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा, जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, तब तक आपका वैल्यू नहीं बन पाएगा। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर आर पीपल हु टॉक टू मी सेइंग, सर आपका मुझे ये वाला चीज बहुत अच्छा लगता है, दैट यू आर वेरी ब्लंट। यस, आई एम ब्लंट बिकॉज दैट इज अ ट्रुथ, एंड आई टॉक विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो बस यूं ही नहीं बोलूंगा। सो आई कैरी दैट वेट टू टॉक, आई गिव यू दैट वैल्यू so that I can tell you that whatever I'm saying it means a lot. Go and check my credentials, see what I have done, see how much I have learned, see how much I have delivered.
So that is what creates your aura, which I call it, and a value system. आपके वैल्यू सिस्टम से लोगों को मैच करना पड़ेगा. दैट गिव्स अ ब्रांड, राइट? एंड व्हाट्स योर यूएसपी? मेरी यूएसपी क्या है? मेरी यूएसपी है कि मैं अपने क्लाइंट को छोड़ता नहीं. मेरी यूएसपी है कि मैं बहुत सपोर्टिव हूं एंड आई एम 24/7 लाइक एज अ फ्रेंड. करेक्ट? मैं आपको कभी रुकने नहीं दूंगा, प्रोवाइडेड यू कीप ऑन डूइंग एक्शंस, राइट? सो दिस इज माय वैल्यू सिस्टम, दिस इज माय यूएसपी. नोबडी कैन से दैट मैंने इनको मैसेज किया और मुझे जवाब नहीं मिला, immediately मैं respond करता हूँ. That becomes my USP. And I also help in tech things. Normally coaches don't teach you the technology part of it. If any of my mentee is looking for some technical support, I do give that. That is my USP. That becomes my USP. Correct? और उसमें मुझे खुशी होती है कि चलो आई एम एबल टू हेल्प दैट. सो इस तरह की चीजें आपको ब्रांड बिल्डिंग में करनी होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग स्टेप 3, विच इज फैमिलियरिटी एंड लाइकेबिलिटी. मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, उसमें मैंने यही बोला कि unless and until somebody likes you, they are not going to buy from you. And there is a principle which talks about it. It is called mere exposure effect और familiarity principle. क्या होता है mere exposure effect और familiarity principle? मैं बताता हूँ. आपको दो लोग दे दिए जाएं, लेट्स से दो दुकानदार हैं, दोनों दुकानदार सेम ग्रोसरी बेच रहे हैं. आप उसके पास जाना प्रेफर करोगे जहां पर पहले से कुछ खरीद चुके हो, आप उसको पहले से जानते हो. होता है ऐसा? नहीं होता है? चाहे वो सब्जी वाला ही क्यों ना हो, फल वाला ही क्यों ना हो, यदि आपने उससे पहले से खरीदा हुआ फल, तो आप जाओगे ना दोबारा, यदि वो दिखेगा तो आप प्रेफर करोगे उसी से खरीदना. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप तो कहीं से भी ले सकते हो, रेट वही मिलेगा आपको, फिर भी आप प्रेफर करते हो उसको. ऐसा क्यों होता है? कंफर्ट एंड कनेक्शन वी बिल्ड. एग्जैक्टली. आप कंफर्ट कनेक्शन, इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो आप सर्टन हो कि ये बंदा गलत सामान नहीं देगा मुझे. आपका रिस्क वहां पे कम हो जाता है. So the familiarity principle says that people love to buy from somewhere where they are familiar with, whom they are familiar with. इसमें क्या होता है? सर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है. नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क, चाहे वो 5 रुपए की चीज क्यों ना खरीदें हम, राइट? सो इसी को कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट और फेमिलियरिटी प्रिंसिपल, और इसी को हम कहते हैं लाइकेबिलिटी. आपने उस बंदे को लाइक करना शुरू किया, चाहे सब्जी वाला ही क्यों ना हो. लाइक करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको प्यार करते हो, बट आपने उसके बिजनेस प्रोसेस से आपको खुशी मिली है. उसने आपको अच्छा सामान दिया, आपने उसका तौल देखा, उसने सही मेजर करके आपको सामान दिया, आपको सामान अच्छा दिया. सो यू स्टार्टेड लाइकिंग दैट, लाइकेबिलिटी बढ़ गई आपकी. तो भरसक 4 लोग सेम बेच रहे हैं, फिर भी आप उसके पास जाके खरीदते हो, राइट? सो दैट बिल्ड्स व्हाट? दैट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट. आपको यदि घर में किसी और को भी भेजना होगा, आपकी जगह पे आप बोलोगे अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को कि बेटा जाना, वो जो ठेला वाला वहां बैठता है ना उस पेड़ के नीचे, आप वहीं से खरीदना. ऐसा कहते हैं हम लोग. या इस शॉप से जाना, इस शॉप की मिठाई अच्छी होती है, वहां से हमने खाया हुआ है, इस शॉप से मिठाई लेना. करते हैं ना हम लोग. क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क कम हो जाता है. एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड आवर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट. ओके. देन व्हेन आई टॉक अबाउट सिस्टम्स, अगेन प्री सेल्स को मैं बहुत फोकस करता हूं. आपको रिलेशनशिप बनाने हैं विद कंटेंट्स, कमेंट्स एंड फ्री वैल्यू स्टफ. आपको वैल्यू देना है, एक्चुअली वैल्यू देना है, सिर्फ नाम के लिए वैल्यू नहीं देना है. एंड इट शुड कम फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट. इंटरनेट पे तो सब कुछ है. आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, उसको एक वैल्यू बना करके आप दो. दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्री सेल्स. नहीं तो मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है. गो ऑन यूट्यूब, सी देयर आर लॉट ऑफ कोचेस हु आर डूइंग फ्री स्टफ, राइट? आप इंटरनेट पे जाके सर्च मारो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. आप देखो मैंने जो स्लाइड्स बनाए हैं, मैं ये सारी चीजें खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं चाहता तो इंटरनेट से इसके हर एक टॉपिक पे 50 आइटम्स मिल जाते, मुझे 50 नहीं 50,000 मिल जाते. बट आई एम नॉट कॉपीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. दैट इज द रियल ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ मी, राइट? So you have to create free value stuff for people as a part of pre-sales inside your business. Then sales. Sales में आपको launches करने होते हैं, offers करना होता है, क्योंकि launches और जो offers है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं to generate revenues, right? अब कैसे लॉन्च करना है, कैसे ऑफर करना है, अगेन दीज आर डिफरेंट मेगा सब्जेक्ट्स. आई वुड से इतना आसान नहीं है, नहीं तो मैं 2 घंटे में सब कुछ कवर कर चुका होता. मैंने आपसे 2 घंटे मांगे हैं 2-2 दिन के लिए. 2 घंटे में ये एक एक टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं दिन दिन भर आपको लगा सकता हूँ, राइट? और तभी शायद खत्म ना हो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट दैट सिंपल. नहीं तो मार्केट में जाओ ना, मार्केट में हर कोई बोल रहा है आ जाओ लॉन्च कर लो, आ जाओ ऑफर बना देता हूँ. यदि इतना ही आसान होता, इतना ही सिंपल होता तो एवरीबडी वुड हैव बीन मिलीनियर बाय नाउ, राइट? तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स लर्निंग्स टू डू दैट.
And number 6 is closing skills and onboarding process. Sales is an important aspect of business, any business, और इस सेल्स में क्लोजिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आप सब कुछ सही करोगे, यदि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, क्लोजिंग नहीं आती है, और एक अच्छा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपको नहीं मिलता है कस्टमर को, तो यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू. आप वहीं पे आके आपकी गाड़ी रुक जाएगी. आप लीड भी जनरेट कर लोगे, लेकिन आपको सेल्स करना नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आएगी, तो विल नॉट बी एबल टू डू इट. So again, this is a skill which you need to learn over a period of time. Slowly and gradually you learn all this. Again, इसके लिए भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, हजारों बुक्स हैं. There are a lot of people who are sales experts जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं. बट किताबें पढ़ना और एक्चुअली जीवन में इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क होता है. राइट? सो यू नीड टू, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस विच आई डू इनसाइड माई पेड कम्युनिटी. मैं मॉक कॉल्स करता हूँ. आई गिव देम platform to speak, platform to practice the sales, practice to handle objections, practice to close the deal on the call itself. ये सारी चीजें हम लोग करते हैं. So you should be learning all this as a part of the skills required for your business. Right? तो ये number 4 हमारा हो गया, what all you need inside a business. Now the 5th part is, okay, is it clear? 4th part is clear before moving to number 5. ये क्लियर हो गया आपको कि बिजनेस में क्या क्या चाहिए आपको सिस्टम के तौर पे. ठीक है? सो आप देखेंगे इसमें, यदि इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो मार्केटिंग, मैंने बताया आपको कि आपको एक बिजनेस के लिए सिस्टम चाहिए. सिस्टम में मैंने क्या लिखा है आप देखिए. मार्केटिंग स्टेप 1, मार्केटिंग स्टेप 2, मार्केटिंग स्टेप 3. मार्केटिंग इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू. सेकंड इज सेल्स. सेल्स में आ गया प्री सेल्स, सेल्स एंड क्लोजिंग, एंड देन यू हैव टू ऑनबोर्ड. सिंपल. तो यदि मैं पूरे सिस्टम को देखूं, तो यू शुड बी हैविंग अ सिस्टम टू डू मार्केटिंग. मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ गई. यू नीड टू हैव अ सिस्टम ऑफ सेल्स, एंड देन यू नीड टू हैव अ सिस्टम फॉर ऑनबोर्डिंग और डिलीवरिंग. एक्चुअली 3 ही सिस्टम चाहिए. इसी 3 सिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग्स एंड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी. सिंपल, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्निकल चीजें बढ़ रही हैं, टेक टूल्स आ रहे हैं, एआई अभी इतना आ गया है हमारे जीवन में. यू नीड टू लर्न द वेज टू यूज दिस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे. You don't need to be an expert. These tools are very easy to use, but you need to learn. मैं आज के डेट में दावे के साथ कहता हूँ, there are very few people who have learned to use the AI tools. उनको पता है AI tools हैं, but उनको यूज करना नहीं आता. So मैं वो सारी चीजें भी कवर करता हूँ. I teach how to use AI tools, right? तो वो सारी चीजें आपको सीखनी है ताकि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड कर सको. And if I summarize all this thing, we have 5 C's which I consider मार्केटिंग और सेल को समराइज करने के लिए. नंबर 1 इज द कंटेंट क्रिएशन. यहाँ पे भी आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए. यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. लेट्स से यू आर गोइंग टू डू, लोग कहते हैं यार, कोचेस है, कहते हैं कि यार आप कोच बन जाओ, आप ये करो, एक कोर्स बना लो और उसके बाद वेबिनार करो और बेच दो. वेबिनार इज फुल ऑफ your communication skills, the way you talk, the way you handle people, the way you involve people inside your virtual meetings, right? तो कम्युनिकेशन यदि आपको नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. उसी तरह लोग कहते हैं कंटेंट बनाना, यदि आपको लिखना ही नहीं आता है तो आप कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे. बोलना ही नहीं आता तो कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे. सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल दिस पैरामीटर्स ऑफ दिस थिंग, कंटेंट क्रिएशन. सो स्टार्ट राइटिंग. रोज कुछ ना कुछ लिखिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, रोज कुछ ना कुछ बोलिए, और उसमें आप एआई टूल्स की मदद लीजिए. और कुछ टूल्स है, बेसिक टूल्स, वो भी आपको आने चाहिए, जैसे ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग में बोलता हूँ. आपको नहीं आएगा, यू कैन हायर समबडी, दैट्स ओके, बट यू शुड बी नोइंग द बेसिक ऑफ ऑल दिस. सो कंटेंट क्रिएशन इज नंबर 1. सेकंड इज कमेंट्स. व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट वैल्यू सिस्टम यू हैव. अगेन आपके कमेंट्स में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. आप कंटेंट बना रहे हो, कमेंट कर रहे हो, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं. देन कम्स कन्वर्सेशन. यू नीड टू टॉक एंड चैट विद द प्रोस्पेक्ट. टॉक लाइक अ फ्रेंड. अभी बहुत लोग सेल्सी हो जाते हैं. मेरे पास भी कल एक मैसेज आया, देयर इज अ लेडी, उनके साथ मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट उनका एक्सेप्ट करा, एंड द फर्स्ट मैसेज शी सेंड मी वाज, आर यू लुकिंग फॉर माय सर्विसेज. मैंने सीधे उनको बोल दिया नो. मैं आपको जानता नहीं, बस मैंने अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, एंड यू आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट बिजनेस. मैं आपके साथ बिजनेस क्यों करूं? आई डोंट हैव एनी रीजन टू डू बिजनेस विद यू. तो लोगों को लगता है कि यार चैट
फ्री का है, चलो मैं तुरंत करता हूँ, उसका भी एक तरीका है. दैट इज वाई से यू नीड टू लर्न टू टॉक टू पीपल. इट इज लाइक गए पहली बार किसी से आप मिलते हो, तो आप ये नहीं कहते हो कि चल भाई पार्टी कर लेते हैं, या किसी लड़की से आप मिलते हो या लड़की किसी लड़के से मिलती है तो कहते नहीं चलो भाई डेट करने चलते हैं. ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिल्ड रिलेशनशिप, यू बिल्ड ट्रस्ट, उसके बाद होता है. सो टॉकिंग इज वन क्रिटिकल कॉम्पोनेंट विच वेरी फ्यू पीपल नो, एंड दिस हैज इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम. आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले लोग बात कर लेते थे. आज सबको पता है कि डीएम में या कॉल पे कोई बात करे उसका पर्पस क्या है. तो यू शुड बी गिविंग देम अ रीजन टू टॉक टू यू. आप चाहते हो इसलिए लोग बात नहीं करेंगे, आपको उनको रीजन देना पड़ेगा कि लोग आपसे बात करें. दैट इज हाउ इट गोज, राइट. ओके, देन कम्स call bookings. Once you are giving them a reason to talk to you, understand what they need, understand the gap, and then invite them for a call so that you can discuss it in detail and move forward. Again, call booking is not that easy. जब तक वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा या लेडी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी on the other side, they'll not open up. If they'll not open up, they'll not discuss their problems. If they don't discuss your problem, you are not going to tell them how you are going to help them. And if they don't feel that you are able to help them, they're not book a call, right? तो ये सारा प्रोसेस का पार्ट है. सो कॉल बुकिंग में भी आपको प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, उनकी नीड डिजायर को समझना पड़ेगा, गैप को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन उसको इनवाइट करना पड़ेगा. देन कम्स अगेन द क्लोजिंग पार्ट. तो आपको क्लोजिंग के ऊपर सेल्स नहीं करनी होती है. या ऑलवेज से कि लोग कहते हैं ना सेल्स कॉल है, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बोलता हूं. मैं कहता हूं सेल्स कॉल नहीं है. नो कॉल इज a सेल्स कॉल. It's a persuasion call or it's a qualifying call. You need to qualify your audience in advance before saying yes or no, right? तब जाके सेल्स होती है. आप सेल्स कॉल बोलते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है. देर इज नो नथिंग कॉल्ड सेल्स कॉल. यदि आप उसको सेल्स कॉल की तरह लेके जाओगे तो देन यू विल बी गोइंग विद अ माइंडसेट टू सेल समथिंग. And if you go with a mindset to sell something, you're not going to sell anything. Mind it. Again, this is a epiphany which I got. You don't have to sell. ये मैं बोलता हूं, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ वैल्यू एंड ऑरा सो दैट पीपल love you and they automatically come to you that I want your services. So don't sell if you want to sell, but be ready to sell. Again, be ready to sell, but don't sell. Create that kind of a value that people say yes to you without even you telling them that you take my services, right? That's it. Okay, so now I have something special for you. I have almost covered most of the things, but I deserve a genuine feedback in terms of your rating and review. For that, I want to give you a link. This is my Google, my page review link. I want to give it to you so that you can just click on it and give me a review. Is it okay? Do I deserve your review? Okay, so let me share that link. I'll be, just putting it in the chat box so that everybody can do that. Okay, I've mentioned the link in the review. I'll also put it in the chat WhatsApp group as well. इसमें भी मैं कर देता हूँ. So take a minute. First, it will ask about the star rating. Give me a rating, a genuine rating. I don't want anything fake. जो आपको लगता है कि I've done a good job. 5 स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए, जो भी है आपको देना है दीजिए. And then write something at least in 100 words. कम से कम 100 words तो लिखिए, क्योंकि वो good, very good लिखिए ना तो पता नहीं चलता है. So a small feedback will help me, do better in future. Yes, Meena ji, tell me. सर मेरा पुराना वाला लिखा हुआ आ रहा है जैसे मैंने क्लिक किया. दोबारा लिखने का नहीं आ रहा है क्या कुछ? उसको हटा रही हूँ तब लिख पा रही हूँ, वैसे नहीं जा रहा. मतलब आई ट्राइड बट वो जा नहीं रहा. मैं एक बार फिर ऐसा यहाँ है. तो दूसरी मेल करती हूँ. एक बार ट्राई करके देख लीजिए if you can do हाँ that. मैं ट्राई करती हूँ सर, दूसरी से देखती हूँ. Okay.
नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, Yes, कोई बात same is happening for me. Just last message is showing. नहीं। ओके ओके ओके, हम्म चलिए मैं क्या बोलूँ। नहीं जा रहा था। उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, उसी में एक दो लाइन और ऐड कर सकते हैं इफ। हाँ सी हाँ कैसा वो है कि कर सकते हैं। Yes, वो that पुराना we वाला can ही do. दिखेगा आपको, हम्म बिकॉज वो ऑलरेडी आपने सेव किया है। हम्म। खाली वो पुराना वाला जो दिख रहा है उसके ऊपर आपको एडिट करके नया वाला डालना है, नथिंग एल्स। अच्छा ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक। मतलब पुराना वाला आपका सेव करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके मतलब आप ये कह रहे हो कि गूगल पे ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए ऐसा हाँ दिख रहा है। ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए दिखा रहा है। नाउ वी हैव टू ओके चेंज इट एज पर ठीक है दिस डन। न्यू सेशन। ठीक या यू कैन ऐड इट, मैं तो ये कहूंगा पुराने वाले को रहने दीजिए, उसी में एक एंटर करके यू कैन राइट अबाउट दिस थिंग, तो दोनों रह जाएगा। ओके, टेक अ मिनट एंड डू इट प्लीज। ओके, वी हैव हाफ एन आवर टाइम, यस। 8:25 हो रहे हैं अभी, 8:26 हो रहा है, एंड वी आर almost done. It will take another 10-15 minutes, then we'll have the Q&A session. कोई भी क्वेश्चन है related to anything of your business, we are going to tackle that as well, so that we complete by 9 o'clock. 9 बजे से ज़्यादा मैं भी नहीं खींचना चाहता इसको, and I hope we'll be doing everything correctly. Okay, done. Thank you, Divakar ji. Thank you, Siddharth ji. Thank you, डन everyone. सर। Good. Thank you, Meena ji. Good. So, thank you, Saket ji. Good. So, let's move on. Now, are you ready to unfold something which I have kept for you? This is what I'm gonna share. Ready? Are you guys ready? So what are my goals for you? Why I'm doing this? So I have a goal for me as well, for you as well. So my goal is again clarity in mind so that you can have clarity in your action. Yesterday I also talked about it. So the goal is to give you a crystal clear way to move forward. Else you'd be stuck somewhere because of some reason or the other. Most of the people are stuck. I want to give you a clarity. Yesterday also I talked about it. Now also today also I talked about in all multiple aspects of knowing yourself, knowing your customer, understanding a business, what are the steps you should be taking care of inside your business, and other things which relates to creating a system for your business. यदि इन सारी चीज़ों को हम लोग यदि समझ लेना और करें तो things would be easier for us. So I have decided to give you a clear path, and that is why I covered everything. Now I also removed some of the myths so that you can get in action. बहुत सारे myth की बात हमने करी थी, मोटिवेशन की बात करी थी हमने, विजन बोर्ड की बात करी थी हमने, राइट? हमने मोटिवेशन स्पीकर्स के बारे में बात करा था. So these were few of the myths which we removed yesterday so that we can get into action. But now when I say get into action, how am I going to help you? So this is an intersection solution which I have made for you. Now there is the one circle is representing you, one is me, and one are the facts. So you have a need and a desire. Based on your need and desire, you are going to do some actions. I have my expertise and I have my strategies which can align with your need and desire. And there are facts which are working today and which can be personalized for you. So this intersection of actions is between you, me, and facts. If all these things are aligned, you get a solution. And the solution will help you to move forward. Making sense? Right? समझ आ रहा है?
It's not about, giving you a one size fit approach. So this intersection solution is between me, you and the, जिसको कहते हैं ना, हकीकत क्या है, हकीकत से हम भाग नहीं सकते. आप कुछ हो, आपकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, आपके कुछ स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, मेरी एक्सपर्टीज है, मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ लेवल तक पहुंचा हूं. मैं आपको मदद कर सकता हूं. और कुछ फैक्ट्स हैं जो आज वर्क कर रही हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्पेशली कोचिंग, फ्रीलांसिंग बिजनेस, मैं उन सबको कंबाइन करके आपको एक एक्शन पाथ बना के दूंगा, एंड दैट विल वर्क. दैट इज इंटरसेक्शन सोल्यूशन 1. एंड द सेकेंड इज हाउ यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ. ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस पार्ट. आपको लाइफ में भी क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा. सो दिस इज इंटरसेक्शन सोल्यूशन नंबर 2, राइट. ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही जाके आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा. एक जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, आप इन्वॉल्व हो और फैक्ट्स इन्वॉल्व है. दूसरे में सिर्फ और सिर्फ आप हो. यहाँ पे कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है. आप सोचोगे रातों रात में करोड़पति बन जाऊं, नहीं हो सकता. आप सोचोगे कि मैं एक दिन कर लूं और हो जाएगा, नहीं हो सकता. ह्यूमिलिटी भी आपको रखनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. So all these things put together, this two intersection solution is gonna help you achieve success, right? So what are we going to do? We are going to implement all these things inside my 2020 coaching system, where you get the updated, customized, and personalized mentoring to have your business going ahead, whether it is coaching or freelancing. So 2020 is the name of my program, where I take you inside the system and give you the real mentorship where you need to take your business ahead. बहुत सारी चीजें होती हैं. So इसमें आपको मिलता क्या है? What do you get inside? You get an extensive onboarding and battle plan call. इस battle plan call में I give you an actionable 1-year business plan. 1 साल का planning हम लोग करते हैं. Then I give you top 3 immediate actions to get going. ये नहीं कि plan कर दिया, उसके बाद अभी क्या करना है पता ही नहीं है. Top 3 immediate actions which will help you get going. रुकना नहीं है. A customized progress tracker which will help you to keep a track of you. Weekly 2 live calls, one a one-on-one call and one a group coaching call. So this is how it looks. Then 2 weekly live calls. Again I just said, एक तो वो वाला हो गया पहला जो one-on-one call हुआ, और ये दूसरा group coaching call हुआ, right? So 2 live call मिलते हैं. बोनस में मैं एक सैटरडे ट्रेनिंग करता हूँ. अगेन दैट इज अ लाइव ट्रेनिंग विच आई डू, लाइक द वे आई एम डूइंग टुडे. दिस इज अ वर्कशॉप, बट ए सैटरडे ट्रेनिंग में रोज हर सैटरडे को करता हूँ at 11 AM on a Zoom, where you get a third live call. यहाँ भी you can join and you can ask your questions, बट उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करता हूँ. 15-20 minutes का शॉर्ट टॉपिक फॉलोड बाय Q&A. So you get actually 3 live calls. Then you get access to premium Facebook and WhatsApp community of growth minded coaches, and you also get what do you say, access to my learning management system, where I have made crisp and concise value material so that it can help you as a reference. So what you need to do is just book a call with me if you think that this can help you. That's it. I have a call booking link. I'll share it in the chat and the WhatsApp group as well, and I'm done. So first of all, let me first put this link inside the group so that you can book it whenever you want. Just a second, let me copy this. I'll put it in the chat. Okay, so here goes the chat. So anybody who wants to book a call, the link is here. I'll also put this link inside the group so that you don't miss on it and you can book a call with me. Now I'm open for any questions. Day 1, day 2, or any question related to your business. The stage is all yours. And thank you for patiently listening to me for long, almost 1.5 hours. 30 minutes I have kept for Q&A session. If you have questions, I'll immediately answer here. We can spend some more time. And if you don't have any questions, we'll close. So the stage is all yours. First of all, I want you to ask me questions, and then I'll take a feedback on today's session. So any questions? Be open, be vulnerable. Alok ji, Yes, Hanmanta ji, बताइए. I just tried to book a call, but the timings are very awkward for me. Tell me what time I can,
customize a time for Yeah, you. मतलब मैं देख रहा था, मतलब Hmm. this is something personal. I don't think I should discuss out here. Maybe I put you a very separate message on the WhatsApp so that we can work Sure. it out. Sure. No Yeah. issues at all. Done. We'll do it. You have my number. Yeah. We are I've got inside your the. number on the WhatsApp, so Yeah. I'll just ping you on your personal number. Sure. That would be Thank you, great. Alok. Welcome. Any question related to today's sessions or yesterday's session? If you think any doubt you have in your mind, or you want any further clarity on the concepts which I shared with you. Anyone? I hope I have not bored you. No, I it was wanted to make nice it crisp. session. It was Yeah. nice session, Alokji. Sorry, I did not open my camera today due to Koi some baat nahi. restrictions. I understand. No And issue. it was nice session, clarity session. Got some clarity. And my one question will be like, what should be that ideal time one should put to get success in business once someone starts, and what should be indeed? I know that it depends on individual, but Yeah. somewhat from your experience, what should See, be that I minimum read a book. or I don't maximum know. ideal time? Yeah, I'll tell you. There is nothing called ideal, but I read a book. I don't know. I don't remember the name of the author. He talks about 10,000 hours. Right. Right. So anything which you are doing, you have to spend 10,000 hours to become successful. I'm not saying the definition of success for you might be 10,000 crores. For somebody, it could be 10,000 rupees. Correct. So the Right. definition of success is different. But what I say is you start doing with full energy. And there is a timeline where you build trust, especially in coaching and freelancing business. It is more of a trust game. And trust needs time to build. Right. सो बट मैं नहीं कहता कि आपको 10,000 घंटे रुकना ही पड़ेगा. हो सकता है कि 50 घंटे के बाद ही आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लो, आपको बिजनेस आना शुरू हो जाए. राइट. सो इट इज वेरी पर्सनल. ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी पर्सनल. मैं हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट बिल्डिंग इज कैन नॉट हैपन वन टू मेनी. Trust building always happens one to one. So the more you invest time with somebody, the better you can build trust, and that person can buy even if you don't have any customer, even if you don't have following, even you nobody likes your post. Nothing to worry about it. आप पहले दिन से कस्टमर ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप उस बंदे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लो और उसको वैल्यू दिखाओ कि हाँ मैं आपके साथ ये करके आपको ये चीज रिजल्ट दिला सकता हूँ. Right. Thank you. Welcome. It was really a nice question, Diwakar ji, actually. Yes. Anybody else? मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन दो ही लोगों के पास नहीं होता है, या तो सब कुछ समझ में आ जाता है या कुछ समझ नहीं आता है. Yeah, good, Meena ji. I'm leaving Clear now. or all clear? Yeah, clear or all clear, exactly. It's clear or all clear, so no idea. So thank you so much, sir. It was Meena ji, really before very good. leaving, I wanted to have your feedback of today's session. आपने 2 दिन रहा. If you can open your camera and just share your learnings or your overall feedback on what we did in these 2 days, that will help us to further do better. Nice, sir. It's a really very good session, I can say. In 2 days, clarity to yes, sometimes you have, but still there are the things which you have shared, like that 100 no's ka activity. I started implementing. Instead of listening song, I just listen one regular bhajan which I listen, and after that I just started thinking about my content and writing on my notepad during my travel in metro. And believe me, I able to schedule my post during that period only on LinkedIn. Very nice. So these types of, I think, because when you get the seat and able to do the things, so I thought I have a seat, so why not to use this time instead of listening something else? Let's brainstorm and read something and then write something. Yeah. So definitely these sessions always help. And really very wonderful sessions. The activity, the today's activity, if I say, that statement you force us to write. Yeah. So these type of workshops where we do the real activities, the statement now, even I have taken the screenshot even. Okay. I just repeat myself even ki, yes, this is the one thing I have written, and few things when you share with the full confidence and share with this platform, these platforms where I am connecting, I feel ऊपर वाला सुनता है और वो वहां से ही कहीं से रिवर्ट होके वापस आता है. So I always participating that way. Might be my camera is not on, but I am always on a listening mode, and I always participate whenever you asking. The reason being, I feel like if I have something and I can share,
Sure. The example yesterday I have given of my own Yeah. example, very Yeah. vulnerable, nobody can share, might be. But Yeah. I'm very much open and straightforward, so the way you are. So I shared that, and might be this will help to others also. Those who wants to listen the recordings, might be their kids will get the help of that. Correct. Very So nice. Very really, nice. thank you so much. Thank you so much. Thank you, Minaji. Thanks for your wonderful feedback. Okay, anybody else? आलोक जी एक Yes. क्वेश्चन हाँ जो बिल्कुल. मतलब जिसका रिप्लाई आपने पहले भी मुझे दिए, Mm-hmm. but I want to know it another time because you know my whole background. Mm-hmm. I was stopped, again I started. Mm-hmm. Okay, I just want to know what is the mantra for success in online business. What Clarity. steps we have to take on regular basis, not about the business, do posting, do checking, no, just the mantra for success. What we have to do every day to be successful in the business. Yesterday I talked about that only. मैंने कल बिजनेस के बारे में बात ही नहीं किया. मैंने बोला Okay. सिर्फ क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. वो क्लैरिटी जब तक आपको होगी नहीं ना, आप कंफ्यूज स्टेट में रहोगे हमेशा. And a confused mind cannot deliver the right things. हाँ. Right. So I'll send you the recording of what we did yesterday. That will give you literally bulb on moments, and you'll be shocked to know that these things are literally holding you back. और मुझे पता है कि आपको And कौन-कौन सी चीजें होल्ड करके रखती हैं. I cannot हाँ, force anybody. yes. That is why I never force anyone. But I Yeah. know there are certain things, if you can clear it out, आप आगे बढ़ोगे. तो क्लैरिटी होनी Yeah. चाहिए. यस, एक चीज तो मैंने क्लियर कर लिया, जो मेरा ब्लॉकेज था कंटेंट का, दैट इज आई कैन से नॉट 100%, बट दैट इज क्लियर, दैट ब्लॉकेज आई रिमूव. Okay. Good. Yeah. And okay, and today's recording also we will Yeah, get. if you want, I can Yeah, share both please, these recording. Yes. Thank you. Okay. Thanks a lot. Welcome. Okay. Now we have two people left. Everybody has Mithu Roy and Hanumanta ji. I would like to have your feedback as well. My feedback, I told Alan, he already posted it, and there are some good takeaways for me even today. Mm-hmm. Though I'm into marketing and sales for quite some time, but some clarities regarding the way I want to move forward in my personal business I have got it. Right. But there are some things that I want to discuss with you in person. I'm just typing a message on WhatsApp to you on your personal numbers as that maybe if it gets paid from 5 to 10 minutes tomorrow, I'll be able to Sure. gain more clarity. Yeah. I Will really definitely. thank you for both these sessions. I really Welcome. thank you. Thank you so much. Thank you very much. Welcome. Okay. How about Mithu? आपकी राय जानने बिना खत्म नहीं करूंगा मैं. सर तो आप तो यूनिवर्सिटी लेवल मतलब पीएचडी लेवल का एक्चुअली यू हैव गिवन द लर्निंग्स टू अस. इट वाज सो इंटेंसिव लर्निंग and it's so much we have learned, like that creating a system, the business system, in that how you have said all the marketing steps, like steps 1 to 5, then and 1 to 6, so many, I think 6-7 pages more than that. I have made the notes. Yeah. And the customer demographics. So all these things are really, it is seriously so many things we need to implement if Yeah. we really want that. Yes, the way we want our business success, the clarity and how we can reach customer, what are the things, because even the 5 C's, what you have said, the content creation, comments, then conversations, closing. So all these things are like really means I am not really getting that words to express, sir, but it was seriously, it was truly mesmerizing for me, what I can say. It was so much you have given, like you have just poured your heart in this, this 2 days. I'm not talking about only today. Yesterday also, it was too much you have given, like, and today also so much of clarity, like everything we came to know. We have never, the word is very small actually. So if I say someone, if you say the clarity, they will say word is, but the how you have defined it, it is, now we are thinking it's just like, so much you have given, sir, so much. Good. Thank you so much. Thanks that it has helped you, understanding things better. The purpose is only to give you clarity so that you are not stopping anywhere.
मेरा वही पर्पस रहता है कि आप आगे बढ़ते रहिए. Whatever best I'm learning, I'm putting it here in different ways. So you might have been into different trainings, but every training or every session is entirely different, because I keep on reading, I keep on doing researches on my own. तो जहाँ से जो कुछ भी सीखता है ना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ इन माई ओन वर्ड्स. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. सो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. यस. Excuse me, and the most thing is, sir, every time you come with some new concept, always some kind of new. So that is very interesting. This time also, we have even actually, I'm talking about myself. I have not thought about that. The clarity, okay, let's see. I was not having that idea that you will come up with so much, like so many things in this. And how we were having that concept, how we used to take the things, that what clarity means to us. Now, actually, after having your 2 days, this workshop and that implementation, then writing the questions, making statement, then we came to know, okay, this is not a small thing, it's a huge thing it is. So For how any I do it, I'll success- tell you. एक सप्ताह में लगाता हूँ टॉपिक सोचने में. उसके बाद में जो मुझे आता है, जो मैं और पढ़ता हूँ, उन सबको मिला करके देन स्टार्ट क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट. वंस द डॉक्यूमेंट इज रेडी, देन आई क्रिएट अ प्रेजेंटेशन आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इन माय ओन वर्ड्स. आपने देखा होगा कल का भी मेरे वर्ड्स वो रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्टेड है. तो मैं मेरे दिमाग में जो आता रहता है मैं उसको बस लिखता जाता हूँ. आई क्रिएट अ प्रेजेंटेशन एंड दैट इज वाई आई एम सो रिलेटेबल टू इट. तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, देख के पढ़ना नहीं है मुझे. आप किसी भी स्लाइड को उठा के पूछ लो तो उसमें मैं एक एक वर्ड बता सकता हूँ जो मैंने, क्योंकि मैंने खुद लिखा है दैट वे. So nice of you. Thank you so much once again for your lovely feedback. And I'm wishing every one of you a very good success. Now, if you don't have any question, if you still have any question, we have 10-15 minutes. If not, we'll close and we'll meet again in maybe next sessions, next trainings, anywhere, anytime. Right? Thanks, Alokji, for delivering you. such a Thank you. wonderful session. Thank you. Thank you, Siddharth ji. Thanks. Thank you, Mithu. Thank you, Anamanta ji. Thank you, sir. Take care. Good night, everyone. We'll Yeah, see you again. bye. Bye-bye. Good night. Bye.